Hello students. Now on today uh, our topic is use of spirometer. So what is spirometer? I am telling you. This is a spirometer you are seeing here. So first we introduce about this instrument. This instrument is also based on the principle of micrometers, and we can find out the radius of the curvature of the mirror. ये मेनली हमको इसी को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यू कैन आल्सो फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द शीट एंड अदर्स. And basically we have to find out the radius of the curvature of the mirror, concave mirror. This is concave mirror and convex and spherical surface, anything we have to find out. We can find through this instrument. So first we study about this and its part. So this you are seeing here, it has three legs, 1, 2 and 3. It has three legs and one is a point, and it has a circular disc, The total number of divisions, circular scale division is 100 divisions, and it has a main scale reading. You are seeing here there is main scale reading, and from 0 to 10 above and from 0 to 10 below. You are seeing here this is a spirometer, and we can rotate this part through the upward direction and downward directions. So this is a total this is called a spirometer. So now this spirometer is also works on the principle of screw gauge. You are seeing on the screen, and it is measuring instrument used to measure the radius or curvature of spherical surface and the small thickness also. So first we have to find out the thickness. So before starting our experiment, so first we check the error of this instrument. It has error or not. So before starting the experiment, first we check. Then now to check our errors, positive or negative or nil. So you are seeing here कि आपके लेग्स जो है ये एक सरफेस में, दिस इज अ प्लेन सरफेस. वी ऑलरेडी पुट द स्पिरोमीटर ऑन द प्लेन सरफेस, एंड वी कैन चेक हियर. यहाँ पर आपका ये देखिए एक पेपर है, ये पास हो रहा है. इट मीन्स कि पेपर आपका ये पास हो रहा है. इट मीन्स कि ये आपका यहाँ पर टच करवा, ऑलरेडी ये टच नहीं है. तो देन we rotate the spirometer. I am rotating the spirometer and touch the surface of the. Okay, total touch हो गया है. I think ज़्यादा हो गया, तो I think ये आपका अब देखते हैं कि सभी सरफेस आपके सामने है कि आपके पेपर्स में देखते हैं कि अब ये पेपर पास नहीं हो रहा है, कि मीन कि ये टच हो चुका है. 0 IOS यू आर सीइंग ये 0 यहाँ पर देखें, और इसके मेन स्केल में 0 देखें. बोथ जीरोज आर इन द स्ट्रेट, सो देयर इज नो एनी एरर. थोड़ा सा इसको पास में कैमरे के साथ ले जा. देखो यू आर सीइंग द 0 एंड दिस 0, बोथ 0 आर इन द स्ट्रेट. So it has no any error, right? It has no any error. Okay student, थोड़ा सा मैं इसको और पास में जाकर दिखा रहा हूँ. I am trying to see you very clearly. You can observe very clearly. थोड़ा सा मैं इसको और लाइट के सामने ले जा रहा हूँ. ये देखिए, तो ओके. तो नाउ हियर एक बार और मैं दिखा देता हूँ. both zeros are in the straight and there is no any error. Now we have to find out the
pitch. So you are seeing the formula, pitch equal to distance moved by the screw upon number of rotation. Okay, so I am rotating the minimum 5 times, 4 times according to you. Again 0 come in the, ये 0 again come हो गया, 1 complete rotation, and then you are seeing 2 complete rotation, 3 complete rotation, and 4 complete rotation. So I am showing you 4 complete rotation में कितना हो रहा है. I am showing you एक डिवीजन, थोड़ा सा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ. I am showing you, so 4 कंप्लीट रोटेशन में एक डिवीजन कम है, यानी कि 4 है. ये 4 कंप्लीट नहीं है, 0 पूरा नहीं है, ये आपका 8 डिवीजन्स कम है. इट मीन 4 कंप्लीट रोटेशन आपका यहाँ पर हुआ. इट मीन्स अगर 5 टाइम्स होगा तो 5 टाइम्स हो सकता है. तो आप फिगर में देख सकते हैं कि पिच ऑफ द डिवीजन इज़ 1 मीटर. पिच ऑफ द, हाँ, पिच कैसे निकाला गया? तो टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन. सो आई एम टेलिंग यू, आई एम टेकिंग द मिनिमम 5 टाइम्स. सो 4 टाइम्स मैंने लिया था, 1 टाइम्स और लेते हैं, 5 टाइम्स लेते हैं ये. एंड 5 टाइम्स में 5 रोटेशन आपका डिविजन्स. 4 लिया था तो 4 टाइम्स 4 हुआ, और 1 लिया और थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया था. ये आपका 5 डिविजन्स. मैं आपको नाउ यू आर सीइंग टोटल 0. यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये आपका 5 हुआ, 5 डिविजन्स हुआ. तो टोटल डिस्टेंस 5 एंड नंबर ऑफ डिविजन्स 5. 5 का टू 5.5 का टू 1 millimeter. 1 millimeter is the pitch of the screw. So least count is equal to, I think you have already performed and find out the least count of the screw gauge. So you will apply the same procedure to find the pitch, to find the screw least count, means pitch upon number of divisions circular scale. So pitch equal to 1 millimeter and number of divisions circular scale is equal to 100. Total 100. You are seeing also here 100 divisions. यहाँ पर 90 के बाद 10 divisions और होते हैं तो 100 divisions हो गया. So that is 1 by 100 is equal to 0.01 millimeter and 0.001 centimeter. Okay, and you can here according to your book distance moved equal to 4 millimeter. हमने 5 ले लिया है, no problem. And complete rotation is equal to 5, distance moved 5, so pitch equal to 4 by 4 equal to 1 millimeter. Value will become same. Okay, so now our topic is, our objective is to determine the radius of curvature of given spherical surface using spherometer. We have to find out the radius of curvature of this mirror. So now we will apply the theory. What we apply the theory? So now I am showing you the radius of curvature. To formula of the radius of curvature, L square upon 6h plus h by 2. You are seeing here. What is the L? L is the distance between two legs of the spherometer. ये जो legs हैं, इस legs का जो distance दोनों leg के दोनों बीच का distance होगा, that is the L. तो L is the distance between two legs of the spherometer as is the height. Suppose that ऐसे हुआ, कैसे find out करेंगे? ये आपका कर्व है, स्फेरिकल सरफेस है, और ये मैंने एक प्लेन I draw the plane and then this height is called the h.
And now we have to find out the value of the h and l. First we find out the value of the l. L is the length of the distance between two legs of the spherometer. So I am putting the spherometer on the paper. So I am putting here, if you turn the page number 32 on your book, then you draw, you are seeing a triangle, and I am putting in a triangle form. This is a very गुड चांस, एक आपका चांस ही है कि ये आपका टोटली थ्री लेग्स जो हैं एक 3 पॉइंट्स पर टोटली ये जो है फिक्स्ड है, पुट हो रहे हैं टोटली. सो you press this and point them A, B, C and join them. After join them A, B, B, C and AC. You can also put during the experiment in your lab, you can put your spherometer on a paper sheet here, and you can also put here and mark the point, and you can mark the point just like as A, B and C, and join them A, B, B, C and AC. You can join them now, and we will measure the length of the AB, BC and AC. So now AB is equal to, then you are seeing that this is a 4, exactly is coming 4 centimeter AB, and BC is also coming. I already measured this line. BC is equal to 4 centimeter and AC is equal to also 4 centimeter. I already measured this. So AB, BC and is equal to 4 centimeter. You can note down here. Observation: L is equal to AB plus BC plus CA upon 3, that is 4 plus 4 plus 4 upon 3 is equal to 12 by 3 is equal to 4 centimeter. This is the length. This is the distance between two legs of the spherometer. Okay, student, this is L, and we have already find out the least count of the instrument is equal to 0.01 millimeter, and that is 0.001 centimeter. So now here, how will you measure the value of the h? क्योंकि L तो हमने फाइंड आउट कर लिया, L तो आ गया, L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट द h? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द h, first we will put the spherometer on the surface of the mirror, and 3 legs also on the surface of the mirror here, and rotate, and you can rotate the spherometer till touch the all legs as well as tip of the screw on the surface of the mirror. I am rotating here, and you are seeing very clearly here, and स्फीरोमीटर का शैडो कुछ हो रहा है, बस थोड़ा सा मैं एक बार now it touched on the surface of the total 3 legs of the spherometer, and as well as tip of the, अगर इसको थोड़ा सा हम इसको और चेक करना चाहें तो मैं इसको पेपर्स को देख लेता हूँ. अगर कोई होल होता है तो पेपर भी तो क्रॉस करता है, बट कुछ क्रॉस नहीं हो रहा. इट मीन्स टोटली टच्ड है ये. नाउ वी आर सीइंग द रीडिंग 80 is coming, बिकॉज 80 के जस्ट 80 के सामने, तो ऑलरेडी मैं इसको मेजर कर चुका हूँ. सो यू विल नोटेड हियर 80, that is the initial reading. I already noted here the initial reading of the spherical surface is 80. Okay, now
Now again we remove the spherical mirror and again we put our spherometer on the plane surface and then we rotate the surface. क्योंकि यहाँ पर आप देखिए होल होगा. अब अगेन देखिए कि ये जैसे यहाँ पर रख दिया तो अभी यहाँ पर टेस्ट जो है वो होगा. अभी क्रॉस कर रहा है, देखिए वो क्रॉस कर रहा है, यानी कि अभी ये हमको रोटेट करना है. नाउ वी रोटेट द स्फेरोमीटर एंड टच द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, सरफेस ऑफ द टेबल, and we can also count the complete rotation. You are seeing the 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 and 0. अब 0 जैसे आ जाए तो एक बार हमको चेक करना चाहिए कि क्या टच तो नहीं हो गया, क्योंकि हम लोगों ने 0 पर ही टच होना था. तो एक बार चेक कर लेते हैं टच हो रहा नहीं, क्योंकि अभी 80 फिर से नहीं आया. ये टच हो चुका है, टच हो चुका है. इट मीन्स नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन 0. कंप्लीट रोटेशन 80 नहीं आया, वो पहले ही टच हो चुका है. आई थिंक सो देयर इज नो एनी कंप्लीट नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन एंड फाइनल रीडिंग इज कमिंग 0. फाइनल रीडिंग इज कमिंग 0 ऑन द ग्लास स्लैब. ओके, एंड नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन n is equal to 0, no complete rotation, and number of surface square division x is equal to a minus b. A is 80 and b is 0. So 80 and 0 is equal to 80, and total reading is equal to n into p plus x into LC. So we can note down here and we can calculate here the total reading. The total reading H is equal to N into P plus X into LC. So number of rotation is 0, P is equal to 1 plus X is equal to 80. Here it's coming is equal to 80. So you can put the value of the 80. LC is equal to 0.01 millimeter. So that is 0. So that will come 0.80 millimeter. You can change to centimeter, that is 0.80, but here we can write here. Now again this is the one value. Okay, पहली value आई. Again we perform the same